गुड मॉर्निंग ज्योति मैडम। एक मैसेज भेजता सबको, एक मिनट। मैसेज भेजते बाद में आते हैं सब लोग, आई डोंट नो व्हाई। गुड मॉर्निंग बट सर। गुड मॉर्निंग मैडम। एक मैसेज भेजता सबको, नहीं तो आते नहीं। तो मेरा मैसेज आ दिखता है। रिदान से पोता उठ गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं चलो। ओके। मेरे को आया नहीं अब तक ज्योति जी। तो 4-5 आ जाते हैं, फिर चलाते हैं। हाँ ज्योति मैडम। सर क्या करेंगे? आपको वेट करना है, कीजिए, नहीं तो फिर आज नहीं करते हैं। नहीं नहीं करेंगे ना, वी कैन स्टार्ट ना सर। 2 मिनट रुकते हैं खाली, नहीं तो 1-2 आएंगे, यस अपन सर। करेंगे स्टार्ट। नो नो, 2 मिनट रुकते हैं। ओके सर, ओके। ऐसा स्टार्ट करें अभी। विल रीड ज्योति मैम, कैन यू रीड? Yes, I can do. हाँ, मैं जितने को हमको रीड करना है। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी लाइव। How to हाउ टू eliminate एलिमिनेट बैड bad फीलिंग्स। feelings. How to eliminate bad feelings. You can change anything in your life by changing how you feel. When you change how you feel about any subject, the subject must change. But in changing the way you feel, don't try to get rid of bad feelings because all bad feelings are simply a lack of love. Instead, you put love in. You don't try to get rid of anger or sadness. Anger and sadness are gone when you put love in. There is nothing. Yes, thank you. There is nothing to dig out of you when you put love into you. All bad feelings are gone. There's only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are of love. But all your feelings are degrees of love. Think of love as यू if आर एम्प्टी it होगा, is यू आर एम्प्टी होगा, वो बीच में आ गया नंबर है, सॉरी। यू आर एम्प्टी होगा। sorry, because you are empty of love, but all your feelings are degrees of love. Think of love as it is water in a glass, and the glass is your body. When a glass has only a little water in it, it is empty of water. You can't change the water level in the glass, but by waging war on the emptiness and trying to rip out the थैंक यू भाई साहब। emptiness. The emptiness goes by filling the glass with water. When you have bad feelings, you are empty of love, and so when you put love into yourself, the bad feelings are gone. यस। तो पहले तो हमने सीखा कि फीलिंग से क्या फायदा आता है। वट एवर फीलिंग यू हैव, यू कैन अट्रैक्ट। विद द फीलिंग्स यू अट्रैक्ट थिंग्स। विद द फीलिंग्स यू गेट वाइब्रेशन, जो आप भेजते यूनिवर्स में एक ऑरा बनता है। वी हैव अ सर्टेन ऑरा थ्रू टू व्हिच पीपल आर अट्रैक्टेड टू अस। तो अभी इसमें इन्होंने एक अच्छी एक वो ट्विस्ट लिया है कि फीलिंग्स तो है, व्हाट इफ इट इज अ बैड फीलिंग। क्यों फीलिंग्स ही सब कुछ बनता है। इफ बैड फीलिंग होगी
तो आपका जो भी काम होगा वो अच्छा नहीं होगा. तो फीलिंग इज व्हाट लैक ऑफ लव फॉर एनीथिंग. जहां पर आपका मतलब प्यार नहीं पलता है, वहां आपका फीलिंग बेड हो जाता है. When there is lot of love, फीलिंग का गुड. तो हमको प्यार भरना है उसमें. Well, there is only one force in life, that is force is love. आप अच्छा फील करो, बुरा फील करो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू हैव लव और यू हैव लैक ऑफ लव. तो आपको जो बैड फीलिंग है उसको मतलब मैं जरूरत नहीं, मतलब पुश नहीं करना है, उसको धक्का नहीं मारना है, उसको नाबूद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और बहुत सारा प्यार भर देना है, बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग भर देनी है. यू कैनॉट फोर्स देम आउट. वो वापस आएंगे. आपका गुस्सा है, एंजाइटी है, उनको समझिए, उनको स्वीकार करिए. सी व्हाट दे सेइंग टू यू. एक्सेप्ट देम फर्स्ट. पहले एक्सेप्ट करिए, अंडरस्टैंड देम एंड पुट लॉट ऑफ लव. तो एंजाइटी किस बात का होता है? व्हेन देयर इज एंजाइटी, व्हाट इज इट अबाउट? कुछ डर होता है ना. व्हाट इज एंजाइटी? एंग्शियस आप क्या होते हो? ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, उसने फलाना ढिकना कर दिया तो क्या होगा. So it is all about knowing the unknowing, which is not going to happen. It's all about knowing in your mind about unknowing, and that rarely happens. आदमी का पूरा जीवन भी जाता है, वो न घटने वाली बात घटती नहीं है, पर वो डर से आदमी जीता रहता है. तो उससे अच्छा है कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले और फीलिंग को समझ ले एंड से दैट आई एम अवेयर ऑफ इट. तो उसमें क्या है, उसको जब एक्सेप्ट करते हो, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फीलिंग इट विद लव. एक बहुत अच्छा एग्जांपल था. एक जार में गंदा पानी भरा हुआ था, कचरा पूरा, मतलब मट्टी भरा हुआ. ऊपर से आदमी एक पाइप, फोर्सफुल पाइप से पानी भर रहा है इस जार में, दन 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 फेंक रहा है. सारा गंदा पानी बाहर निकल गया. इट वाज फुल ऑफ प्योर वाटर. दैट जार वाज फुल ऑफ प्योर वाटर. सो व्हाट डिड ही डू? ही डिडंट रिमूव एनीथिंग. उसने कचरा निकाला नहीं, उसने प्योर भरते गया. कचरा अपने आप निकल जाएगी. क्यों? जब प्योर वाटर के अंदर इतना फोर्स होता है तो कचरा टिकेगा नहीं. जब पानी में जोश आता है, क्यों? रिवर इज ऑलवेज प्योर बिकॉज इट इज ऑलवेज फ्लोइंग, इज अ फोर्स. और रिवर का काम ही चलना है. आप कोई कचरा को कचरा रह जाएगा उधर, पर रिवर में इट गो फ्लोइंग. पानी नहीं आता रहेगा. यू कैनॉट स्टेप इन वन रिवर, सेम रिवर अगेन. इट इज फ्लोइंग. ओके. सो आपको एम्प्टी को भरना है. जैसे गिलास एम्प्टी है तो उसमें पानी भरो. बट व्हाट आई गिव एग्जांपल वाज वेरी डिफरेंट, कि उसमें जो कचरा था उसमें जोर से पानी भरा, फोर्स से, तो सारा कचरा अपने आप बाहर निकल गया. एंड इट वाज लेफ्ट विद ओनली प्योर 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 वाटर. सो दैट इज अ ब्यूटी, कि आपको किसी चीज से झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, खाली प्यार देना है. आप समझो कितनी बड़ी. आपको झगड़ना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी को उठा के फेंकना नहीं कहीं, खाली प्यार देना है बस. ये चले. हेलो संदीप. Don't resist bad feelings. Everything has its perfect place in life, including bad feelings. Without bad feelings, you would never know what it feels like to feel good. You would just feel the one blah feeling all the time because you would have nothing to compare with your feelings to in. Sorry, your feelings to. You wouldn't know what it feels like to feel really happy, excited, or joyful. It's through feeling sadness that you know how good it feels to be happy. You can never remove bad feelings from life because they are a part of life, and without them, you wouldn't have good feelings. If you feel bad about having bad feelings, you are adding more power to your bad feelings. Not only will you
will your bad feelings get worse, but you will increase the negativity you are giving out. Now you understand that bad feeling don't, अरे छोटा सा, अरे वापिस वो नंबर आ गया उधर. अरे यार ऐसे ऐसे एक है ना एक हाँ यस Now you understand that bad feelings don't bring the life you want, which will make you more mindful not to let bad feelings take over you. You are in charge of your feelings, and so if you love a bad feeling sweeping over you, one way to discharge its energy is to lighten up. There is a world within, a world of thought and feeling and power, of light and beauty, and although invisible, its forces are mighty. माइटी Charles Honnell, New Thought author. 1850 1945 यस सो डोंट रेजिस्ट बैड फीलिंग जो मैं बार बार बोलता हूँ डोंट रेजिस्ट इट सबका एक परफेक्ट जगह होती है बैड फीलिंग का भी एक रीजन है उसका भी एक महत्व है जैसे इन्होंने कितना अच्छा बताया कि इफ देर इज नो डार्कनेस हाउ विल यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ लाइट हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि इसका भी फायदा है हाउ विल यू अप्रिशिएट लाइट यू डोंट सी डार्कनेस आप जब तक बैड फीलिंग को नहीं देखते हो गुड फीलिंग का महत्व नहीं समझेगा आपको यू वॉन्ट गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट आप इंजॉय नहीं कर पाओगे इसको यू आर ऑलवेज हैप्पी एंड लाफिंग तो आपको मतलब ये तो नॉर्मल बात है यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय इफ यू रियली वांट टू एंजॉय यू हैव टू पास थ्रू अ बैड फेस जबरदस्ती नहीं है पर आ गया उसको स्वीकार करना है उसको समझना है एंड देन ट्राई टू बिल्ड अप गुड फीलिंग एंड कम टू अ बेटर फ्यूचर बेटर प्रेजेंट पर वो पहले आपने जो एक फेज देखा है जितना डाउन थे और अभी आप ऊपर आए हो तो उसका मजा अलग है नाउ एंजॉयिंग आपको भी समझता है कि ये फीलिंग में फर्क आया तो क्यों आया फर्क बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट बैड फीलिंग की तकलीफ क्या थी और गुड फीलिंग का फायदे क्या है टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट यू हैव टू गो थ्रू बैड फीलिंग ऑल्सो फॉर सम टाइम सो यू कैन नेवर रिमूव बैड फीलिंग फ्रॉम लाइफ दैट पार्ट ऑफ लाइफ कभी कभी आएगी कुछ छोटी छोटी बातों में आएगी मगर आपको जब मालूम है व्हाट आर गुड फीलिंग उसके फायदे क्या है यू विल ऑलवेज वर्क टुवर्ड इट एंड यू विल अप्रिशिएट इट आपको जैसे हम लोग वर्ल्ड क्रिकेट खेलते हैं हम क्यों बच्चों को खिलवाते वर्ल्ड क्रिकेट जब तक वो जाते नहीं है बड़े मैच में तब उनको समझता नहीं कौन कैसे बॉलिंग कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट क्या होता है उसके मतलब क्या होता है उसकी चैलेंजेस क्या होती है once they understand and they become better and better this is the way if we understand the bad feeling we'll become better and better at good feelings तो आप इफ यू फील बैड वो बुरा लगता है बैड फीलिंग हो रहा है तो आप और क्या कर रहे हो बैड फीलिंग को बढ़ा रहे हो उसको और हवा दे रहे हो आपने तिनका लगाया है उसको हवा दोगे तो आग लग जाएगी तो बैड फीलिंग सिर्फ क्या हो जाएगा और नेगेटिव बन जाओगे और खराब हो जाएगा और बुरा हो जाएगा और बैड फीलिंग बढ़ेगी तो उससे फायदा नहीं होगा इफ यू ट्राई टू पुश इट ट्राई टू रेजिस्ट इट अरे बेकार है तो और बढ़ेगा वो what you resist persist मैं बार बार बोलता हूँ don't mind but I want it to go in your head so now you understand the bad feeling doesn't bring life you want which will make you more mindful not to मेरे को डर गया अभी not to let bad feeling नंबर आता है बीच में not to let bad feeling take over you now you understand that bad feeling don't bring the life you आपको जो लाइफ चाहिए वो नहीं लाके देते ना which will make you more mindful आपको और समझाएगा it will make you more aware that don't let it happen more and more don't give any energy to bad feeling instead give energy to good feeling bad feeling आया उसको स्वीकारा आपने उसको शांत बिठा दिया तब तक पानी शांत नहीं होता ना कचरा नीचे नहीं मिटता है जब पानी में कचरा होता है ना तब तक पानी शांत नहीं होता है कचरा नीचे नहीं मिटता है and if you want pure water you have to let the water stay the way it is
धीरे धीरे कचरे में जाएगा, and then you can get a pure water. Same way, when you are disturbed in your mind, let the mind calm down, ताकि वो सारा गुस्सा, एंजाइटी सब नीचे बैठ जाए. Then starting thinking of good future, good present, past में कुछ अच्छा है वो सोचिए आप, and you will get better and better feeling. And more the good feeling, more happy you are, more in control you are. आप more you become better creator, because you are the creator. आपके थॉट से आप इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हो, एंड इट्स अ फैक्ट. आप जो जिद पकड़ लो ना, और आप बोलोगे मेरे को तो यही सोचना, अच्छे ही सोचना है, आपके लाइफ में देखो कितना फर्क आता है. जब तक आप जिद नहीं पकड़ोगे, जब तक वो पागल पर जैसे समझने वाला कर नहीं छा जाएगा आपको आपके ऊपर, तब तक वो आपको नहीं मिलेगा. एक बार एक पागल हो जाएगा, नहीं मुझे तो बस पॉजिटिव ही सोचना है, हर एक बार मुझे ऑप्टिमिस्ट रहना है, अपॉर्चुनिटी रहता है, तो कई बार कुछ चीज में आप फेलियर भी होगी और बहुत सारी चीजों में आप सक्सेस होंगे. छोटे मोटे फेलियर है कि उसको इग्नोर करने का, डोंट वरी अबाउट इट. फेलियर आएगी, अरे क्यों आ गई, हम तो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो भी फेलियर आएगी, पॉजिटिव है तो भी निगेटिविटी आएगी. लेट इट कम एंड गो. सोचना नहीं इसको. लिव लाइफ लाइक अ मेडिटेटिव दिस लाइक अ मेडिटेशन. जैसे मेडिटेटिव फेज होता है, विचार आते हैं पर हमको जाने देते. ऐसा नहीं कि थॉट्स नहीं आते, मेडिटेशन में भी थॉट्स आते हैं, बट लेट देम गो, सो वी आर नॉट स्टक देयर. सेम वे इन लाइफ आल्सो नेगेटिव कम, उनको जाने दो, और अपने इस पे ध्यान रखो कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, व्हाट बेटर आई कैन डू फॉर अदर्स, हाउ कैन आई हेल्प एवरीबॉडी. अच्छी सोच लाइए, एंड वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव. So there is a world within a world of thought and feeling and power. There is a world within a world of thoughts and feeling and power, of light and beauty, and although individual, its force are mighty. Because visible नहीं है, light and beauty, all these things, और thoughts और feeling ये सब visible नहीं है, मगर they are very mighty, बहुत ताकतवर है. So there is a world within a world. एक दुनिया है, किसमें दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, और थॉट से फीलिंग, और फीलिंग से पावर मिलता है आपको. तो मेन इज थॉट, there's a world within a world of thought. And what is thought? Of the light and beauty. Thoughts of light and beauty. Even though they are invisible, it is a force that is really mighty, very strong. I hope you understand. World within a world of thought. बाद में लोग feeling और power लिखा, वो because of thoughts, there is a feeling, there is power. So main is world in a world of thoughts. और thoughts क्या है? Light and beauty. उजाला उजाला और ब्यूटी ब्यूटी. Okay. So because we don't understand all these things ना, तो मजा नहीं आएगा. To understand word by word, ये लोग इनके जो वर्ड होते हैं ना, कई बार उसमें से मीनिंग निकालना पड़ता है हमको ढूंढ के. यस संदीप. Deepak, you can just mute yourself. मैं कहता हूँ किसका है, दीपक जी है ना, मैं कहता हूँ भूल से Life कहता is Yes, life Sandeep. is supposed to be fun. When you are having fun, you feel great and you receive great things. When you take life too seriously, you receive serious things. Having fun bring Having fun brings the life you want, and taking things too seriously bring a life you have to take seriously. You have the power over your life, and you can use it to design your life in whatever way you want. But for your own sake, lighten up. To lighten up about bad feelings, I have imagined that feelings as wild horses. There's an angry horse, a resentful horse, blaming horse, sulky horse, cranky horse, grumpy horse, and irritable horse. You name it, there's a stable full of bad feeling horses. If I feel some disappointment over something, then that has happened, then I say to myself, why did you climb on the disappointment horse? Get off it now because it's heading off for my more disappointment, and you don't want to go
where it's going. And so I imagine bad feelings as wild horses I climb on, and if I climbed on them, then I can get off them too. I don't I don't see bad feelings as something that is the real me or anyone else, because that is not the truth. Bad feelings are not you who you are, and they are not who anyone is. A bad feeling is something you allowed yourself to feel, and you can choose to get off those horse as fast as you jumped on it. If you think of bad feeling as a wild horse that you climbed on, it's one way to take the power out of bad feelings. If someone close to you is cranky, their bad feeling will have far less power to affect you. If you imagine them as having climbed on a cranky horse, you will not take their you will not take their crankiness so personally. But if you do take it personally and you become cranky from their crankiness, then you just jump on the cranky horse with them. Respond intelligently, even if unintelligent treatment. Uh, even to Lead, unintelligent Lao treatment. Tao, Lao Sorry, sorry, Tzu, yeah. Lao Lao Tzu, Tzu, Lao Tzu, founder of founder of Taoism. Taoism. Tao is also a philosophy. Tao is also a philosophy. So life is supposed to be fun. लाइफ किसके लिए? मस्ती, मजा, धमाल करने के लिए, मजा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए. बट आप सीरियस हो जाते हो कई बार, and you attract all the seriousness. Everything that you attract will be something that will make you serious about it. तो लाइफ में ऐसे बनाव आएंगे जहां तो आपको लगे अरे बाप रे क्या हो गया, कैसे हो गया, और उसी वक्त आप अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करें. होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ. तो आप जब हल्का फीलिंग करते हो तो आप इजीली इसको मात कर सकते हो. उसको मात करने के लिए आपको अपने आप को शांत रखना पड़ता है. आपकी पावर क्या है? थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिकली. दैट्स ऑल. चाहे कुछ भी बोला कि अरे भाई इसका भी सोल्यूशन मिल सकता है. हर चीज का सोल्यूशन होता है. इफ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट यू विल गेट इट. तो इन्होंने बोला है लाइफ को अलग अलग घोड़े की तरह सोचिए. एंग्री हॉर्स, रिसेंटफुल, ब्लेमिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्स, क्रैंकी हॉर्स, ग्रम्पी. तो जिस ढंग से आप हो, समझो आप डिसअपॉइंट हो, आप रिसेंटफुल हो, आप ब्लेमिंग हो, आप गुस्से में हो, तो यू टू अंडरस्टैंड दैट यू आर राइडिंग दैट हॉर्स. टू लाइटन अबाउट द फीलिंग, उन्होंने क्या बोला? टू लाइटन अप अबाउट द फीलिंग. उन्होंने समझा है आई इमेजिन बैड फीलिंग एज अ वाइल्ड हॉर्स. उन्होंने बैड फीलिंग को हॉर्सेस का नाम दे दिया है. So once you are disappointed, you are sitting on the disappointment horse, and you are riding. Now it is up to you to stop the horse and get down, or you want to ride. आपकी इच्छा तो कोई बोल सकता है आपको. If you want to ride, you can ride. That's a different thing. और आपको नीचे उतरना है तो बहुत सिंपल है. आपको उसको रोकना है और नीचे उतरना है. There are people they love to ride. They just forget they stop also. उनको लगता है मैं अभी घोड़े में बैठ कर अभी कैसे उतरूंगा, और वो राइड करते रहते, और पूरी लाइफ उनकी निकल जाती है इसमें. So I don't see bettering as something that is the real me or anyone else. बेटरिंग हम खुद नहीं है, वो एक फीलिंग आई है जिसको हमारे से दूर करना हमको. वी आर बोथ आर सेपरेट. और वो फीलिंग ट्रूथ नहीं है. वो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, वो आ गई बात. दैट द फैक्ट. हम लोग वैसे नहीं है. सो बैड फीलिंग A bad feeling is something you allowed yourself to feel. अच्छा, you cannot choose to get off that horse. आप जब भी चाहो horse से नीचे उतर सकते हो. और आपने डिसाइड किया मुझे बैठना ही है तो क्या करेंगे? If you think of the bad feeling as a wild horse that you climb on it one way, and it's on its one way to take the power of the bad feeling. If someone close to you is cranky, their bad feeling will have to
power, had to be more far, less power to affect you. If you imagine that the having climbed on a cranky bone, up especially horse में, you will not take their crankiness so personally. आप जो चढ़ भी गए तो उसको इतना पर्सनली मत लीजिए, crankiness का आपका स्वभाव बदल रहेगा. तो आप ये बोलते हैं इफ यू थिंक ऑफ बैड फीलिंग और वो हॉर्स पे बैठे हो, आप क्लाइंब, आपको जब चाहे उतर सकते हो. आपको नहीं उतर पा रहे हैं, प्लीज समवन एल्स कैन लीड. कोई बढ़ पाएगा दूसरा, कोई आगे संदीप को जाना है. तो इफ समवन क्लोज टू इज क्रैंकी, तो उसको क्रैंकी को आप एडॉप्ट मत करिएगा. लेट हिम बी क्रैंकी, शांति सुनिए उसको, बट डोंट एडॉप्ट इट. आप पर्सनली लोगे तो ये होगा, आप पर्सनली लोगे उसको तो आपको लगे तो आप खुद क्रैंकी बन जाओगे. डोंट टेक इट पर्सनली. किसी कुछ बोला, किसको बोला आपको नहीं मालूम. He said because something happened to him, और उसकी लाइफ में हुआ है. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ को वो अफेक्ट कर सकता है. उसको गुस्सा किसी और चीज पे, क्रैंकी आपके साथ हो रहा है. सो डोंट अडॉप्ट इट एंड रादर वर्क ऑन इट. बट इफ यू डू टेक इट, आप पर्सनल लोगे तो आप भी क्रैंकी हो जाओगे. और क्रैंकी हो गए, इट विल मल्टीप्लाई. 1 and 1 are always 11, but 1 plus 1 is 2. ओके, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली इवन टू अनइंटेलिजेंट ट्रीटमेंट. कोई आदमी अच्छा ट्रीटमेंट करता है, उसको भी आप अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए. धीरे धीरे वो आदमी बदलेगा. ही विल चेंज फॉर यू बिकॉज यू हैव चेंज. यस, कौन पढ़ेगा? हेलो, हेलो अतुल, कैन यू कंटिन्यू फॉर मी? और मनीषा, उसका छोटा बच्चा है. Okay, I can जी. take. ओके, थैंक यू. यस. Yeah. Uh, एंड सो विथ and so एनीथिंग, and so with anything in life that if I don't know, I don't want, I use fun and take power out of what I don't want. Some, I think you have to raise it. Okay, one second. One second. I'll just have to zoom it. ओके ओके. Sometimes watching. Okay. Sometimes watching myself or other people ride wild horses in various life situations makes me laugh. And when you can laugh yourself out of a bad feeling, that is really something you have just changed your life. So if you are feeling bad, don't give that bad feeling more power by beating up on yourself that you feel bad. If you do that, you are just whipping the wild horse into a bigger negative frenzy. The idea is not to hate bad feeling, but to deliberately choose good feelings and choose them more often. When you resist bad feelings, they increase. The more you don't want bad feelings, the more you increase them. The more you resist anything in life, the more you bring it to you. You don't care about bad feelings if they come upon you. You don't resist them at all, and then you take all power out of them. Change. यस, देन यू टेक ऑल पावर आउट ऑफ इट. आप रेजिस्ट करोगे तो परचेज करेगा ना. यू डोंट रेजिस्ट, नथिंग विल हैपन. यू विल टेक द पावर आउट ऑफ इट. सो एनीथिंग इन लाइफ आपको नहीं चाहिए, आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए, देन डोंट गिव अ फ्यूल टू इट. ये क्या करते हैं, अपना इमेजिनेशन, शी इज यूजिंग हर इमेजिनेशन टू हैव फन एंड टेक द पावर आउट ऑफ व्हाट आई डोंट वांट. तो मजे में रहती है. ये लेडी ने जो लिखा है उनका एक तरीका है कि जो चीज नहीं चाहिए उसके लिए हंसते रहने का, उसको याद नहीं करने का. थिंक ऑफ समथिंग गुड एंड लेट इट गो. तो शी laughs it out. सो Yeah. ये सब सिचुएशन में बोलती है, ये जो मैं हॉर्स के बारे में सोचती हूँ, ये हॉर्स वो हॉर्स, इट मेक्स मी लाफ. सो इफ यू आर फीलिंग बैड, डोंट गिव दैट बिलिंग पावर. उसको पावर मत दीजिए, उसको और ताकत मत दीजिए, उसको और फोकस मत दीजिए, नहीं तो और बढ़ेगा वो.
So if you're whipping the wild horse into bigger negative frenzy, तो तकलीफ होगी. तो ये आइडिया क्या है? नॉट टू हेट बैड फीलिंग और रेजिस्ट इट, बट उसको समझना है, स्वीकार करना है और अपना काम करना है. ब्रिंग फन इन इट, ब्रिंग मोर लव इन इट, और उसको दूर करिए अपने आप. जो रेजिस्ट करोगे इतना इंक्रीज होगा, ये लेके जाना. मोर यू रेजिस्ट इट विल इंक्रीज. सो द मोर यू डोंट वांट बैड फीलिंग, द मोर यू इंक्रीज देम. जितने आपको ज्यादा नफरत होती है उससे, उतना वो इंक्रीज होता है. And more you resist anything in life, the more you bring it to you, the more it persists. Simple सी बात है. So don't care about bad feeling. If they come upon you, don't resist them at all, and then you take all the power of them. इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? जब भी आपको बैड फीलिंग आती है, तो उसको देखिए, समझिए, उसको बोलिए मैंने समझ लिया है, उसको जाने दीजिए. जैसे मैंने एक उदाहरण दिया अभी मेडिटेशन का. Like in meditation, thoughts come and goes. It is just like a river. Water will go on flowing. Meditation is like river. Let it flow. Let the thoughts flow. मगर आपने कोई बैड फीलिंग को और पावर दे दिया, उसको उसके ऊपर और बैड फील किया आपने, तो आप अटैच हो गए. So when you get attached to something, क्या होता है? वो आपको पकड़ लेता है. बट आपको बैड फीलिंग आई और आपने उसको पकड़ा नहीं, उसको भाव नहीं दिया, तो इट विल गो अवे. तो बैड फीलिंग को पावर निकालना क्या करना? उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना. Don't give importance. Don't focus on it. Don't give power to it. Just by ignoring it, it will go away. आपको इग्नोर मतलब देखना है, समझना है और बाद में छोड़ देना है. कि इग्नोर किया तो भी तकलीफ है. So to understand all the bad feelings, it has got some benefit. वो आता है, कुछ बेनिफिट लेके आता है. वो आपको समझाता है इधर ये हो सकता है, वो हो सकता है. बी अवेयर ऑफ इट. समझ लो उसको पूरी तरह से. फिर इसको तेरा काम हो गया है. एंड देन स्टार्ट इन्वॉल्विंग, एंगेजिंग गुड फीलिंग. वो बैड फीलिंग क्यों आई, तो आपको मालूम है उधर से आई, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? समथिंग बेटर यू कैन थिंक अबाउट. यू कैन ऑल्सो लाफ अबाउट इट. तो इस तरह से आपको बैड फीलिंग को निकाल देना है, कि बैड फीलिंग विल नॉट गिव एनीथिंग. उल्टा जो आपको नहीं चाहिए वो आएगा. बैड फीलिंग आर नॉट गुड. वो आपको कुछ कम लाके नहीं देगी, उल्टा आपका जो है वो भी लेके जाएगी. बैड फीलिंग से क्या होता है? जो आपके पास है ताकत, वो भी ले लेगी, आपको ड्रेन आउट कर देगी. तो बैड फीलिंग आर गुड अप टू सम एक्सटेंट. ज्यादा टाइम उसको टिकट नहीं देने का है. तो उसके लिए हमको क्या करना है? वी हैव टू कम इनटू गुड फीलिंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड इसको एम्ब्रेस करना है बैड फीलिंग को, एंड देन उसको छोड़ देना है प्रेम से. एंड देन यू वर्क ऑन व्हाट दैट बैड फीलिंग वाज सेइंग. वो बोलती है ये तकलीफ हो जाएगी, तो वो तकलीफ कैसे नहीं हो? लेकिन तुम्हारे को घाटा आ जाएगा, तो घाटा कैसे नहीं हो? उस पर काम करेगा. करके क्या फायदा? लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो डरने से घाटा और बढ़ेगा. आप बिजनेस में घाटा कर रहे हो और डर जाओगे तो और घाटा बढ़ेगा. बट इफ यू टेक अ राइट एक्शन एट द राइट टाइम, यू विल बी एबल टू अवॉइड इट. सो बैड फीलिंग का फायदा क्या है? इट विल टेल यू व्हाट कैन गो रॉन्ग. इट कैन टेल यू व्हाट इज समथिंग दैट इज नॉट रियली राइट इन योर लाइफ. वो आप समझ जाओ, you will start acting on what is right, what is the solution. And when you start working on that, you are feeling very high, you are feeling happy कि आपने कंट्रोल ले लिया. अभी तक आपने कंट्रोल किसको दिया था? बैड फीलिंग को दिया था. अभी आपने कंट्रोल उसको वापस ले लिया. So now you are more powerful automatically. Why? Because you did something. So action is very important. Knowledge is a part of this. Knowledge आप लेते हो, वो आप कहीं रिकॉर्ड करते हो, स्टोर करते हो सबकॉन्शियस माइंड में, पर उसका यूज नहीं करोगे तो वो चला जाएगा. बट इफ यू गो ऑन यूजिंग इट, इट विल रिमेन देयर एंड देयर ओनली. तो नॉलेज का फायदा क्या होता है? व्हेन यू टेक एक्शन, तो वो नॉलेज आपके सबकॉन्शियस में पक्का बैठ जाता है एंड बिकम वेरी स्ट्रांग. तो पावर किसको देना है? अपने गुड फीलिंग को, अच्छी फीलिंग को, अच्छाई को. ओके, इस पॉइंट से पावर. Yeah, there is something similar to the what Jainism teaches, to have the Yeah. madhyastha bhav. कि संभव रखो in good or bad. It is Yeah. the same thing, Equanimity. which is the essence of the Vipassana also, which says is that to maintain equanimity. Yes.
So this talks to the same thing. Okay. Anyway, coming back to the book, points of power. Point number one: every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, the magnetic field goes with you. Point Goes two. with you. Point two: you attract everything through the magnetism of your field. Your feelings determine whether your field is positive or negative at any time. Point three: every single time you go, you give love through your feelings, words, actions, and add more love to the field around you. Point four: the more love in your field, the more power you have to attract the things you love. Point five: Yeah. imagine what you want as the size of a dot. For the force of love, what you want is smaller than a dot. 6, you do not have to turn negative into positive. Just give love from. Can you just change the page? नहीं वो हो गया है ना? Yeah, yeah. It's over. You, yeah, that the page number was coming in between. अच्छा You अच्छा give sorry love. yes yes बोलिए. Just a minute. And 7 minutes is there. Yeah. You do not have to turn negative into positive. Just give love for what you want, because the creation of what you want replaces the negativity. Spend 7 minutes each day. Remember, 7 minutes. Please हाँ. spend 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you. As simple as that. What you know your name belongs to you. There is only one force, and that force is love. Thing has changed anyway. Just a minute. क्या होता है? Whatever. The screen has shifted. Okay. To lighten up Okay, about bad feelings, imagine bad feelings as wild horses As wild horses. you climb on. If you climbed on them, you can climb off them too. Sorry, if you climbed on them, you can climb off them too. You can choose to get off the horse as fast as you jumped onto it. Change what you give, and you will always, without expectation, change what you receive, because that is the law of attraction. Without exception. Without exception. Without exception, sorry. Change what you receive, because that is the law of attraction. This is the law of love. Yes. So this is a major point of this chapter. Every person is magnetic. You can attract through your magnetism anything that you want with your feelings. Every single time you love through your feelings, you attract something and you take action. The more you love your field, more power you have to attract. आपको क्या चाहिए? Imagine that and give love. You don't turn the negative into positive, but you put more love in that. Or spend 7 minutes every day, imagining something good, better, which you know. There's only one force in life, and that is love. वही काम करता है लेकिन. To lighten up about bad feelings. So lighten up about bad feelings. Imagine bad feeling as a wild horse. और मस्त बोला है, wild horse का नाम दे दो. Anger तो angry horse पे बैठा है. Decent बोले तो decent horse पे बैठा है. So imagine as if you are on that horse. और आपको उतरना है. हाँ बोलो. And change what you give. आपको change करना है what you give. And you will always, without exception, change what you receive. जो आप दोगे वो आपको मिलेगा. So if you change what you give, you will change what you receive. Because that is the law of attraction. This is law of love. Yes. मनीषा जी आप क्या बोल रही थी? आज क्या है? आप you were saying something in a message. Today is Saraswati Puja, Vasant Panchami. अच्छा. Today is Vasant Panchami. Okay. It's a big festival. For the Lord, it's a good day to pray Lord Saraswati. I mean Goddess Saraswati. Let Goddess Saraswati bless us all.
ओके ओके, आज सरस्वती की पूजा करनी है। यस, और ऐसे और तो एक रोज पंचमी करनी होती है, चाहिए, ऐसे तो और एक रोज करनी पंचमी होती चाहिए, है वो। बट आज स्पेशल स्पेशल हाँ होनी आज चाहिए। उन्हें बाकी रोज करनी है, राइट या राइट यार। बोलता है वो हाँ, मदर लव डे, वो तो एक दिन बोला लव डे क्या होता है मदर का, बोलता मैं तो रोज प्यार करता हूँ। और वो एक गुड। खास दिन रखा है, जो आदमी को नहीं समझता है उनको भी अवेयरनेस आ जाए। हम्म, ओके सर, तो एनीबॉडी वांट टू आप से रोज करते हो, दैट्स व्हाई। अच्छा, आप रोज करते हो, इसके देवी आप पे ज्यादा प्रसन्न है, हम पे थोड़ी कम प्रसन्न है। बस क्या। So you take away all the graces of the goddess. हम तो नहीं सारा लेट उठते हैं, आई लाइट एम हियर करके टू जाते हैं, स्प्रेड माय डियर, आई आलस करते एम हैं, स्प्रेड, मुझे तो स्प्रेड करना है बस। आलस करते रहते हैं। आप तो सब इसके लोग को लिए जिसको भी अच्छा लगता है बुरड़ी, आप और आदमी को लेके आओ और ब्रिंग इन द सेशन, नॉट ऑन द ग्रुप। कुछ सेशन में आना चाहिए बस, आई विल बी हैप्पी। यस। यस सर, कोई कुछ I बोलेगा? have circulated I have circulated to many, including in the family, हाँ हाँ, but they have further more priorities than us. This thing, I don't know what. होता होता I होता can't होता। teach them what. क्या आप तो जब तक वो करेंगे नहीं ना, एंड दे विल अंडरस्टैंड कितना फायदा होता है लाइफ में, कितना शांति मिलता है, वो नहीं समझेंगे। और खास करके तो आप बात करना, एक्चुअली आप काम करते हो ना पूरा दिन में, ये भले ये सी लोग बोले, मनीषा भी बोलेगी कितना काम है मेरे पास, ये लोग 6-7 घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकते। बाकी काम उनका जाता है टाइम स्ट्रेस में, सोचने में, और वो 12 बजे तक बैठे रहते हैं वही काम को ये लोग। और काम क्या होता है, इट विल एक्सपांड एज पर टाइम यू गिव। अब ज्यादा टाइम है तो आपको और एक्सपर्ट होगा, एंड यू हैव टू बी वेरी गुड डेलीगेटर। ये लोग डेलीगेट भी नहीं करते और एक्स्ट्रा काम लेते हैं, और काम 7 घंटे के जगह 8-9 घंटा हो जाएगा, काम उनसे हो जाएगा। बाकी टाइम उनका इसी में जाता है, स्ट्रेस में, कुछ सोचने में, कुछ ढूंढने में, एंड दे आर वेस्टिंग टाइम। दे वोंट बिलीव मी नाउ, बट इफ दे ट्राई इट दे विल अंडरस्टैंड। एक्चुअली जितना कम काम करोगे इतना आप कमाओगे। तो ये लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा काम होगा, नहीं, गिव अ गुड वर्क, चार्ज मोर, गिव द बेस्ट। 10 आदमी है, 6 आदमी रखो गुड क्लाइंट, डोंट गो 10 क्लाइंट, अर्न मोर, आपके घर में भी पीस रहेगा और आपको आनंद मिलेगा। Right. इफ पीपल कैन बिलीव दिस एंड ट्राई इट, इट विल हैपन। आप मानो आपको 80-20 रूल आपको मालूम होगा, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट 80-20 रूल इज कॉमन। Yeah, yeah. तो सीए हो या मैं हो, हमारा ना 80% पेमेंट आता है 20% से, और 20% हमको ढूंढना है कौन है 20%। तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी, बाकी मुझे मालूम नहीं, अपनी लाइफ सुधर जाएगी। तो इफ दे Right. कम टू दिस प्रोग्राम दे विल अंडरस्टैंड कि कितना पावर मिलता है काम करने का, कितनी ताकत मिलती है। यू कैन डू एक्स्ट्रा वर्क इन लेस टाइम। Yeah, यस, that there's knowledge and this things inside. Not, that doesn't come by telling or pitching. It will come when they have the hard time. हाँ, They खुद realize. उनको तो दे किसी देना और खुद को खुद जो बोलते हैं ना कि egg को if you break from outside the life ends, and if it यस, breaks from inside the life begins. क्लास, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सही बात, थोड़ा Thank तो you. मर जाएगा और वो खुल के खुद आएगा, बाहर निकलेगा लाइफ के लिए। एब्सोल्युटली। Just the example of egg is a very, very important example to change anybody. But still, they see, they understand everything, but no action. नहीं, वो ठीक है, होता है ऐसे। 80-20, ये भी 80-20 है, ये तो 80-20 भी नहीं है, ये तो 90-95 है। 5% ही करते हैं काम। हार्डली फ्यू पीपल, मतलब नॉट इवन 5%, मतलब 3% आदमी अपना गोल लिखते हैं, बाकी लिखते भी नहीं है। एंड दैट मतलब 10% दे नो व्हाट देयर गोल इज, बाकी लोग को मालूम ही नहीं गोल, वो तो खाली रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे, जाना है, आना है, काम करना है बस। देयर लाइफ इज गोइंग टू एंड लेटर ओनली। क्या करें? Like ठीक a है, cat and पूरा dogs. मैप है आपका पीछे, वर्ल्ड मैप है Sorry? आपके पीछे, वर्ल्ड मैप है तो। Yeah. I am staying in a hotel, na? So room अच्छा में. अच्छा, ओके ओके। It's a वेयर आर gym यू, also. वेयर Yeah. आर यू, वेयर आर I यू? am at Kathmandu. I am at Kathmandu, Nepal. तो आप कभी से हो काठमांडू में? तो होटल में रहते हो आप? अरे तो क्या Are you करेगा? living? So why are हाँ, you in Kathmandu? You don't have, I thought you are having a house there. घर से आपका निकाल बेटा दिया यहाँ मेरे को. नहीं, बेटी यहाँ पे है, पढ़ रही है. बेटी यहाँ पे पढ़ रही है, so I have to तो be आप here. होटल, I am retired from Reliance. So before taking up हाँ, anything, certainly I work something, but before taking up हाँ, something, I am taking an off with the daughter. Well, to help ओके her ओके, studies.
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Great. आप जब कुछ नहीं है। ऑफ, अतुल जब आपने ऑफ लिया है तो आपको मालूम पड़ता है कितना मजा आता है इसमें। Yes. एक कितना हटके, मतलब वो हम लोग इतना पूरा लाइफ में हमने सोचा नहीं, एक्चुअली ये ऐसा ऑफ लेना ही चाहिए आदमी को। अब भी कहते हैं 5 दिन नहीं, तो बिगर ऑफ लेना चाहिए आदमी, और वी आर Yes. अफ्रेड, यू नो। ओके डियर, चलो फिर और कोई किसी बोला था कोई? एनीबॉडी एल्स वांट टू से Yeah. समथिंग? भावना जी, दीपाली चौधरी, हरिकिशन, जतिन। ज्योति मैडम, आप तो पहले से स्टार्ट से हो। आज के चैप्टर में कोई बोलो ज्योति जी, इफ यू कैन ओपन अनम्यूट योरसेल्फ। यू आर समवेयर एल्स, आई डोंट नो। Sir, निधि I am मैडम, here निष्ठा जी। only. I am in the middle of some work. ओके ओके, नहीं, ओके ओके, ठीक है ठीक Yeah. Thank you, sir. है ठीक है, तो फिर कल अब मिलते आज हैं। का आई थिंक बहुत इट वाज अच्छा अ था वेरी गुड सेशन टुडे। आज का रखना दोनों मिला के कि हरीश फीलिंग भाई। कितनी इंपॉर्टेंट है टू गेट टू योर सक्सेस एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम। जो फीलिंग होती है वहां पर आपका फोकस जाता है, उसका वाइब्रेशन निकलता है, एंड यू अट्रैक्ट दैट टाइप ऑफ थिंग्स। एंड बैड फीलिंग आपको और बैड करेगी, इसलिए उसको ना तो धक्का मारना है ना रेजिस्ट करना है, बिकॉज इफ यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। बट आपको उसमें बहुत सारा प्यार भरना है, बहुत सारा पॉजिटिव फीलिंग भरना है, एंड बिकम मोर पॉजिटिव। बैड फीलिंग आएगी, वो आप रोक नहीं सकते हो उसको। उससे कैसे काम करना है, उसको और ज्यादा बैड डिक बनाना है, उसको ज्यादा फोकस देना नहीं है, उसके बारे में गंदा बोलना नहीं है, तो वो और बढ़ेगा। यू हैव टू जस्ट एब्जॉर्ब दैट, अंडरस्टैंड इट, एंड pour लव इन इट, दैट्स ऑल। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you. Thank you. Thank- Bye. Wish you a great day. ग्रेट, थैंक यू, बाय। और सरस्वती पूजा करना। सब लोग Yes, सरस्वती yes, yes. सरस्वती देवी की पूजा करना। Yes, yes. एटलीस्ट मंदिर में। Happy और अपने बच्चों लोग को fall. और अपने बच्चों लोग को ही बोलना कि सरस्वती देवी की पूजा करो। Yes, sir. Yes. थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। Mantra, sir, we always speak, that is Tamsoma Jyoti Gamaya. It's the shortest mantra of Saraswati Ma. हाँ, Tamsoma थोड़ा सा जुत्ती Gamaya. मारता। हम्म, 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 हम्म। Okay. Okay, dear. Thank you. Bye.